Thank you everyone. I'm getting a great response that these videos are helping you a lot in your studies. Thank you actually. So ये videos actually यही इंटेंट से थे कि आप दिसंबर के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हो दिल से करो एंड आई एम श्योर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स ज़रूर याद रखना फॉर योर एग्जाम्स। दिसंबर 22 क्रिटिकल एग्जाम्स है, सो अच्छे से करने के लिए यस रिमेंबर दिस। नाउ व्हाट अदर थिंग्स, लॉ ऑफ एविडेंसेस क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस किस नेचर में होता है। लॉ ऑफ एविडेंस एक रूल्स है, एक सेट है असर्टनिंग के किस तरीके से फैक्ट्स को कोर्ट्स में प्रूव किया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। डिफाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है। वेल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एज सच इज नॉट डिफाइंड बट इट इज confined to the criminal procedure code, वहाँ के हिसाब से defined है, and the proceedings is under the income tax can be non-judicial also depending on the nature of the case। तो ये केस टू केस डिफर करता है और जनरली सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स को हम लोग यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोसीडिंग्स को हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। देन do this topic of fact होता क्या है। well fact includes anything, any state of mind or any kind of relationship। so fact होता क्या है, fact proof कैसे किया जाता है। any kind of relationship, anything that is perceived by your senses can be fact। your mental condition can be a fact or it can be any kind of physical facts or psychological facts। so facts के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। then another question, yeah, courts are concerned with legal relevancy and not logic। what is the legal relevancy and what is the logical relevancy? Logical relevancy which bears a casual relationship, whereas legal relevancy comes when there is a legal implication। sometimes the things may be legal but not logical, okay, sometimes the thing may be logical but not legal। so legal and logical relevancy may at times stand on a separate footing, but most of the time legal and logical relevancies goes hand in hand most of the time, but sometimes it may differ, okay। so ये topic जरूर पढ़ के जाना। then another topic जो आप पढ़ के जाइएगा वो yes, what is a risk stay। risk stay एक तरह का evidence है, एक तरह का जो इशू होता है उस इशू के सराउंडिंग फैक्ट्स जो होता है वो होता है रिस्क स्टे। जब आप एक फ्रूट लेते हो और फ्रूट के सराउंडिंग जो स्किन है जो उसको प्रोटेक्ट करती है वो अपने आप में एक तरह का रिस्क स्टे हो जाता है। तो हर एक फैक्ट के सराउंड में एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। कई पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि इस पिक्चर में ये विलन बना, लेकिन विलन बनने के पीछे की कहानी होती है। तो वो रिस्क स्टे एविडेंस उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड इशू के साथ जुड़ा हुआ है और वो एक तरह का इशू को डिटरमाइन करने वाली कहानी है कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। तो रिस्क स्टे के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ओके। देन या डू रीड दिस केस ऑल्सो। अजय आफ्टर लर्निंग दैट चंदर had been murdered by Bijoy went to the spot and found the body of Chandra was being taken to the house of Chandra by 4 persons who told him that Bijoy had murdered Chandra and he had run away। In this statement of Ajay, he was told of 4 persons that Bijoy has murdered Chandra and run away is admissible evidence। well इस केस में ये देखना होगा सेक्शन 6 के हिसाब से क्या होता है। see facts sometimes may not be directly connected and sometimes may form a different part of the transaction, but if we place a reliance on that fact, does it lead to a logic does it lead to a legal conclusion or not? यहाँ पे अजय after learning, हाँ अच्छा, Ajay is a person who is standing somewhere, you can say a bystander, and he was told by other bystanders 4 persons that Bijoy has killed Chandar and he has ran away। now by itself is not admissible because Ajay himself has not seen the murder। अगर उसने खुद ने देखा होता तो then that fact would have been connected to the issue। ये जिन्होंने देखा है उन्होंने उनको बोलना होगा। तो दिस इज जस्ट अ hearsay evidence, एक सुनी सुनाई बात की तरह। so that cannot be admitted in evidence, okay। Another topic that you must read is admissibility। admissibility of facts क्या है,
मोटिव क्या है, प्रिपरेशन कैसे होती है, मोटिव और इंटेंशन के बीच में फ़र्क क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो प्रूव होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखने का है। देन A files a suit against B for recovery of money on the basis of pronote. B denies execution of pronote as also taking off the loan. Now, A wants to prove that at the time when the loan was advanced, B was in the need of money in connection with the marriage of his daughter. So, A ने B के खिलाफ केस किया for recovery of the money on the basis of pro note यानी promissory note. B denies कि मैंने कभी कोई pro note साइन नहीं किया था and मैंने कभी कोई लोन भी नहीं लिया. Now A wants to prove that जब ये लोन लिया गया था, he was taken money for the marriage of his daughter. So will A be allowed to prove it? The answer is yes, he can. If the motive, if the preparation is directly connected to the issue, he can prove it. So in this case, B has required money for his marriage. Now A has to show that B has the motive of taking the money for his daughter's marriage or daughter's marriage, and that's why he has executed the pro note. If A proves the fact that B was in need of the money, then it is a relevant fact. Okay, then it is a relevant fact. Okay, then study this. What is admissibility of fact necessary in explain or introduce the relevancy of fact? So when we need to introduce a fact, what is the requirement of it? Section 9 clearly बोलता है which are necessary to explain, support or rebut inference, establish identity and show any kind of relationship. उन सारे facts को admissible facts बोला जा सकता है. ठीक है, तो do read that. And write a short note on admissions. So what is the admission? Admission is defined as a statement or documentary. Admission amounts to or depends upon question. Admission may be a party or agent. Admission is best evidence and admission has to be clear. तो एडमिशंस होते क्या है उसके बारे में रीड अच्छे से करके जाना. एक ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी. कोई पर्सन जो आंखों देखा एक्चुअली कानों सुना वो चीज़ बोलता है, वो एक एडमिशन है. एक रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई बात एक एडमिशन हो सकता है. कई लोगों ने एक साथ एक इंसिडेंट को देखा है, वो एक एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो एकदम क्लियर, प्रिसाइज, नॉन वेग एंड नॉन एम्बिग्यूस होना चाहिए. ओके, अनएम्बिग्यूस होना चाहिए. सो वो एक तरह का एडमिशंस बन सकता है. तो एडमिशंस इफ प्रूव then it can lead to many things. Then ये पढ़ के जाना. Confession caused by inducement, threat or promise is irrelevant. So you cannot cause किसी को जोर जबरदस्ती से confession करवाओगे, confession will not hold good in law. So what is confession? Confession is a statement which is made by the person who is a convict, one who is being that is about to be punished in law. So he makes a statement of admission, that's called a confession, but not to any kind of police officer, not in any kind of inducement, or not in any time when he was in custody of any of the officers. That's not admission. Okay, so then confession made by inducement, confession made by accused, or confession made in any nature, ये सारे points याद रखना. ये सारे पॉइंट्स इसके साथ पढ़ के जाने हैं. तो प्लीज ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा. व्हाट इज दिस कन्फेशन? ओके, जून 21 में था. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वाज मेड बिफोर अ विटनेस हु वाज क्लोज रिलेटिव ऑफ द अक्यूज्ड, and the testimony of the said witness was reliable and truthful. यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी एक लेवल से आगे जाके, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल. एक्स्ट्रा जुडिशियल, दैट इज जुडिशियल कन्फेशंस आर बिफोर द कोर्ट, ओके, और रिकॉर्डेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, whereas extrajudicial confession are voluntary and can be relied upon by the court with other evidences also. So जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऐसा होता है, जो चीज़ें आप कोर्ट के सामने बोलते हो वो जुडिशियल कन्फेशन, जो चीज़ें आप ऐसी जगहों पे अथॉरिटी के सामने या किसी और नेचर में बोलते हो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल, क्योंकि वो कोर्ट के सामने कभी नहीं बोली गई. तो इफ द कन्फेशन इज मेड नॉट बिफोर द कोर्ट, इट इज टर्म्ड एज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. ठीक है, ये पार्ट जरूर पढ़ के जाना कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड जुडिशियल कन्फेशन. या
ये भी याद करके जाना, व्हाट इज द कन्फेशन, व्हाट इज एडमिशन, दोनों के बीच में मेनली डिस्टिंग्विश क्या है, किस एरिया में कितना डिस्टिंग्विश आता है, क्या क्या नेचर का डिस्टिंग्विश है. Okay, so confession is a statement which is made by the accused of admitting that he has committed crime. And admission is a statement which suggests any inference of fact. तो शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा होगा, या मैंने ऐसा देखा था, that's admission. Whereas confession अपने खुद के बारे में बताना. Okay, Ramesh is a traveling auditor in the service of railway. The company detected a defalcation in the accounts of the accused Suresh, a booking clerk of the company. Upon detection of defalcation, Ramesh said to Suresh, "You better pay the amount defalcated rather than going to the jail, and it will be better for you to tell the truth." So, रमेश एक ट्रैवलिंग ऑडिटर है. रेलवे के टाइम पे रेलवे चल रहा था, पुराना केस है काफ़ी, और सुरेश के साथ साथ चल रहा था. डिफिल्केटेड मतलब जो पैसा उसने चोरी किया है, यू कैन से अकाउंट्स में गड़बड़ की है. सो रमेश ने सूरज को बोल दिया कि तूने जो चोरी किया हुआ पैसा वो सब दे दे और सच सच बता देना. दैट्स व्हाट इट इज. एंड आफ्टर दिस सुरेश accused was brought before the traffic manager, in whose presence he signed a receipt of admitted to have defalcated 1500. Suresh, the accused, was subsequently put off trial of criminal breach of trust as a servant. Is the receipt of signed by the Suresh accused is admissible? उसके बाद वो ट्रैफिक मैनेजर के सामने लाया जाता है और ट्रैफिक मैनेजर उससे जबरदस्ती साइन करवाता है या साइन करवाता है कि तूने ये बोला था, इस पर साइन कर. ओके, एंड देन ही इज पुट बिफोर द मैजिस्ट्रेट. विल इट बी एडमिसिबल? वेल, ये एक्चुअली क्वेश्चन सेक्शन 24 का है. ये जो कन्फेशन हुआ है, दैट इज मेड टू अ पर्सन, एन अथॉरिटी, and it is made with some consequence of inducement or threat, and there is a charge against the accused. In the given case, the travel auditor, this traffic manager, they have some kind of authority. Suresh makes that confession due to some kind of inducement that they will send him to jail if he does not tell the truth. It cannot be admitted. The confession has to come voluntarily. It should not come as the outcome of any kind of threat. So it cannot be called as a confession. Okay. And yeah, this one. A murder is committed in the dark night. Nobody is named as a murderer. The sub-inspector of police goes to the locality to investigate. While he is investigation, B comes to him and says, "It is he who has committed the murder." After that, B is arrested and becomes the accused in the case and tried for the offense of murder. What is the validity of B's statement? Well, again, ये section 25 का part आता है. See, no confession can be made to a police officer unless it is proved that the person has committed the offense. Here, B has made a confession cannot at all be admitted in the trial courts. There has to be some other evidence. So B has been made an accused, and the police officer, and he made a confession to the police officer, cannot be admitted in evidence. तो इसके साथ कुछ और भी फैक्ट्स हुए होंगे तभी वो जेल गया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं. A is an unmarried girl was accused of murder of her newly born child. She was sent in custody of police constable to a doctor for examination. When being examined, she made a confession to the doctor. The police constable was standing outside the room in which A was being examined by the doctor. Will this confession be admissible? Well, this part comes in section 26. No confession can be made to a person when he is in custody to the police officer unless the magistrate is present. Okay. Now, in this given case, A goes to that doctor, and when the police constable is standing outside, he makes or she makes the confession. She makes the confession. But this is during the temporal separation of accused from the police officer. It's not that she has been relieved and she is voluntarily making a confession. It's temporary suspension. So in that case, when there is a temporary separation from the custody,
a confession during that period cannot amount to a confession. At the trial of A for the murder of C, the prosecution, as evidence, I will produce two knives connected with the rooms of house, and I stabbed C. This statement made has been made by A while he was in the custody of a police officer and did lead to a discovery of knife. Whether this reference is admissible? Well, section 26 जो है, it says down that a confession by the accused to the police officer cannot be proved. मतलब आप देख सकते हो बहुत से cases है police officer वाले, and यहाँ पे any fact which is discovered in the information which is received from a accused when the custody of a police officer does not amount to a confession. In this fact, the statement was made by A in police custody and that lead to the discovery of knives. And the statement is admissible because that lead to a discovery. And discovery, that means the evidence is found. That part is admissible. Anuj was tried for murder of Barkha, whose body was found in a well and the ornaments that Barkha were wearing missing from his body. So Anuj was tried for murder of Barkha and Barkha ki body mil gayi but ornaments are missing. Anuj, while in police custody during investigation, said he has removed the ornaments and pushed Barkha into the well. Okay, and pledged the ornaments with Chandan. In consequence of this, the ornaments were recovered from Chandan. Now, will this amount of valid convention? Yes, section 27 ka part. With any fact, when you make a statement and that is discovered as a consequences of the information which is shared, and it is in the custody of the police when that information was given, if it amounts to confession or not, well, that would depend on the discovery that was made. That will depend on the discovery. So here it is given that A has given information or Anuj has given information. The information relates to that ornaments were removed, B was pushed into the well, and he has pledged. Now here ornaments were removed is a statement. The information is that he has pledged with C. If the ornaments are found with Chandar, then it can be said that the information was correct. Then whatever statement he has made pertaining to that was correct. Okay, but by itself this does not amount to a complete confession. But that means ornament pledged with C can be a confession. But he has removed the ornament and he pushed B to the well. That cannot be led through this. Okay. Okay. Now, A on his trial for murder of C, there is a evidence to show that C was murdered by A and B said, A and I murdered C. So, co-accused confession, section 30. So, when more than one person being tried jointly for the same offense and the confession has been made by one of such person which is affecting the other person, then the court may take into consideration that the confession is against the such other person as well. So that is called the statement of the co-accused. And the given case, it is a case of statement of the co-accused. It can be taken by court into evidence. Amar and Bimal are jointly tried for the murder of Roshan. It is proved that Amar said, Bimal and I murdered Roshan. Can the court consider the confession as against people? Again, this is a case whereby the court is trying to consider section 30 where more than one person are tried together for the same kind of offense, that is called co-accused, and one of the accused is making the statement. And when they are provided, they should be tried jointly. So if one person's statement can be used against other, hence the court can take into consideration provided they are tried jointly. तो को अक्यूज में याद रखना अलग अलग ट्रायल नहीं चलना चाहिए, साथ में ही उनका केस सुनवाई होना चाहिए.
तब हम बोल सकते हैं एक पर्सन का एविडेंस दूसरे के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। ये टॉपिक पढ़ के जाना, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, या फिर गवर्नमेंट के चार्ट्स, डायग्राम्स, पब्लिक नेचर्स, ये सब अपने आप में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कवर होते हैं। एंड रीड दिस, देयर इज एक्सपर्ट ओपिनियन कितने हद तक लॉ में एडमिसिबल है, किस तरीके से एडमिसिबल है, क्या इसके भी कोई एक्सेप्शंस वगैरह है कि नहीं, इस बात को ज़रूर देख के जाना। वो कि ओके, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा रहेगा फैक्ट्स वगैरह, तो ये प्लीज़ देख के जाना। ये वाला, when the in the opinion of any person is relevant expert except that certain evidences, the when in the opinion of any person is relevant except, so opinion of an expert is relevant in the following cases। तो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन कब कंसिडर किया जाएगा? जब हैंड रिटन होगा, डिजिटल सिग्नेचर पे ओपिनियन होगा, जनरल राइट्स एंड कस्टम्स के बारे में, यूसेजेस ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स के बारे में, या एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन रिलेशनशिप उसके बारे में। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो ये क्या रहता है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। व्हाट आर द प्रिविलेज कम्युनिकेशन पब्लिक पॉलिसी से कैसे होता है, कैसे उसके अंदर कनेक्शन होता है। यहाँ पे आप जजेस कम्युनिकेशन देखोगे, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिजेस देखोगे, कम्युनिकेशन बाय स्टेट ऑफ अफेयर्स देखोगे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक्ट आता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन बैरिस्टर और अ क्लाइंट या एडवोकेट और अ क्लाइंट वैसे आता है। तो ज़रूर देख के जाइएगा। Okay, and A and B married in 2007. They lived in as a husband and wife up to January 10th, when the marriage was dissolved by a decree of the court. In 2015, A and B has he has committed theft of an ornaments of C. In 2018, trial commences against A for the theft of ornaments. Can B appear as a witness against A and state before the court that he has initiated? Interesting. तो ये जब प्रिविलेज कम्युनिकेशन है उसकी बात हो रही है कि देखो, प्रिविलेज कम्युनिकेशन ये बोलता है कि नो पर्सन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज कैन बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। No person can be permitted to disclose any communication during the marriage unless it is made by the representative. Now, the communication between A and B during the marriage is a privileged one, and the fact that A and B were married was there. But when a communication is made after the marriage is default or dissolved, then there is no consequences of privileged communication. There is no consequence of privilege. Okay. Okay. Next is A is a client. A is a client and he says to B as an advocate, I have committed a murder and want you to defend me. Whether this is admissible, ये भी एक privilege. That is, a attorney, pleader, barrister, vakil. If any communication is disclosed to them, if during the purpose of any kind of investigation, if any communication is disclosed to them during investigation, okay, then that communication is a privileged communication. You cannot force them to share that communication. Okay? Then yes, oral evidence and hearsay evidences वाला ये पार्ट जरूर पढ़ के जाना कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, ओरल एविडेंसेस क्या है, हेयरसे क्या है, कब ये एविडेंसेस को आप किस नेचर में यूज कर सकते हो और किस नेचर में इसके एग्जाम्पशन है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। Then yeah, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या है, एक डॉक्यूमेंट का नेचर क्या होता है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे कोर्ट में ओरिजिनल प्रोड्यूस करना एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स आर सर्टिफाइड कॉपी। तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स किसी चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी या फोटो कॉपी भी हो सकती है।
Then explain the special provision relating to economic or electronic record. Well, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का स्पेशल प्रोविजन 65A में दिया हुआ था एंड 65B में दिया था. इसके हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर, स्टोरेज, डॉक्यूमेंट किसी भी नेचर में हो, ओके, और अगर वो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस में, तो उसको एडमिट किया जा सकता है. What are the principle of estoppel under the Indian Evidence Act? वेल एस्टॉपल का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है. एक बार एक अच्छी रीडिंग जरूर कर लेना एक शॉर्ट नोट के हिसाब से. जब आप किसी चीज को स्टॉप करते हैं, जब वन पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन, बाय हिज ओमिशन, बाय हिज इंटेंशनल कॉज स्टॉप समथिंग टू हैपन, maybe he stops the truth to come out, maybe he stops the lie to be told, but something he does to stop the other person. Neither nor his representative is allowed to do that. But if he does that, it is not allowed. Okay, so that's called estoppels. And A is accused of murder of B by beating him. Discuss the rule of relevancies. तो यहाँ पे आपको relevancy का rule discuss करना है. December 21 का था, लेटेस्ट एग्जाम से था. प्लीज उसको देख के जाइएगा. कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं. देन अगेन December 21 का व्हाट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और सेम उसी ग्राउंड पे यहाँ पे आई स्टोल द माइक, यही सेम ऊपर आपने पढ़ा था. तो उसका एरिया क्या है, क्या डिस्कस करना है, क्लाइंट कैसे बोलता है, प्लीडर को क्या स्टेप लेना है, और प्लीडर के कम्युनिकेशंस प्रिविलेज्ड होते हैं. देन हाउ फार द कन्फेशन डिफर्स फ्रॉम एडमिशन. तो एडमिशन कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, ये पार्ट ज़रूर देख के जाना. एंड यस, state the physical psychological facts. What is a physical fact, what is a psychological fact? ये ऊपर हमने वही देखा था, अगेन जून 22 में आया था. तो प्लीज एक बार फिर से देख के जाना, बट जरूर देखे जाना. कई बार ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना छोड़ना नहीं. ओके, तो आई एम श्योर आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी, एंड विद दिस सपोर्ट एग्जाम के हिसाब से आप अच्छे से लेके आओगे. एंड प्लीज ये क्वेश्चंस जो मार्क किए हैं December 22 अटेम्प्ट के लिए जरूर पढ़ के जाइएगा. ओके, so all the best for your exams. Good luck.